इस्तकबाल है, आप सबका स्वागत है। अर्बन फ्रिंज की तरफ से आयोजित होने वाली इस महफिल में, जिसमें हम अपनी कहानी, अपने किस्से, अपनी कविताएं, अपनी गज़लें शेयर करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं और उसका लुत्फ़ उठाते हैं। कुछ नए कहने वाले हैं, कुछ पुराने, और कुछ सुनने वाले भी हमारे बीच आते रहते हैं। इस तरह ये कारवां बढ़ता रहता है। मुझे खुशी है कि हमारे बहुत पुराने दोस्त अक्षत ने इस महफिल का आगाज़ किया और अर्बन फ्रिंज के तरफ से इसे हर महीने किया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत भाई इसके लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं राज भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो बैठक शुरू हुई है वो, जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि हमारी जो मुलाकातों में हुआ करती थी, उसी को लेकर हम 14-15 साल के बाद जो है वो 12-13 साल के बाद जो है फिर वापस जो है वो जुड़ने की कोशिश में आगे बढ़े हैं। तो उसके लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी था और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इनका सबसे बड़ा फैन भी हूँ, ऐसे मैंने अपने आप मान लिया। मुझे नहीं पता इनके कितने फैन होंगे और होंगे बहुत, लेकिन वो शायरी जो इतनी इनोसेंस से ये तब लिखा करते थे, आज भी इनोसेंस उतनी ही है। आज लिखते और अच्छा है, लेकिन वो इनोसेंस अभी भी जिंदा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कंट्राइव्ड हो गई है। तो ये भी एक कला है, सीखना चाहता हूँ। हो सका तो कभी मैं भी कुछ सीख के लिखता मैं भी हूँ। फ्री वर्स है, फुल फ्रीडम के साथ जब जहाँ जो चाहे जिसके साथ जोड़ के अपने ख्यालों को बयान कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि अर्बन फ्रिंज जो मैंने सेटअप करा है और इसमें मैं चाहता हूँ कि लोग आके जुड़े। ये एक कोलैबोरेटिव स्पेस बने और एक ऐसा स्पेस बने जिसमें लोग आके बोले कि हम ये करना चाहते हैं। ये जिस जगह पे हम बैठे हैं इसका नाम है याद कर, और ये एक इंस्टॉलेशन है जो मैंने तैयार किया था और लास्ट ईयर सितंबर, पूरे सितंबर इंडिया हैबिटेट सेंटर में डिस्प्ले था, सेंट्रल एट्रियम, ओपन फॉर द पब्लिक। और ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करी हुई हैं, मेरे पेरेंट्स ने करी हैं, मेरे दोस्तों ने करी हैं। कई बार मैं सड़क से उठा लाया हूँ, अपने गांव से ले आया हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अपनी अब ज़रूरत अपने हिसाब से ख़त्म हो चुकी है। वो उस पर्पस जिसके लिए बनी थी अब वो इस्तेमाल भी नहीं हो पाती। यादों में अभी भी उनके बहुत कुछ है। तो ये एक यादगार है और मुझे लगता है कि इसमें बार बार मैं जीवन जो है वो फिर से डाल देता हूँ जब आप लोग यहाँ आकर जो है वो अपनी कविताएं पढ़ते हैं और लोग सुनते हैं उनको। तो मैं बहुत बोल चुका हूँ और मैं चाहूँगा कि राज भाई, थैंक यू सो मच। आप इसका संचालन करें, आप हमारी जो है मदद करें इसको आगे लेके चलने में। आज हमारे साथ अंबर अग्निहोत्री हैं, अजय जुगरान जी हैं, हरप्रीत सिंह है, आस्था है और अभिनव को आप शायद याद ही होंगे, अभिनव साबे साची। मुलाकात शायद हुई थी हमारी। तो ये 7-8 लोग हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदमी ख्वाल भी होता है, नहीं भी होता। इश्क आज़ाद भी होता है, नहीं भी होता। ये जो कुछ लोग यादों में रहा करते हैं, इनका घर बार भी होता है, नहीं भी होता। हम लोग आर्टिस्ट लोग जो होते हैं उनका घर बार भी होता है और कभी नहीं भी होता। ज़्यादातर इधर उधर रहना पड़ता है, इधर उधर आना जाना पड़ता है और घर वाले शोर मचाते रहते हैं कि रोज़ रोज़ निकल जाते हो। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अंबर जी को, आएँ और अपना कलाम पेश करें, अपनी कविताएं सुनाएं। अंबर जी। थोड़ा सा झूठा महसूस करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा झूठा महसूस कर रहा हूँ जब अगर मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो but I started trying to write in Hindi as well. So, because of that. So I think I reached the school again
to learn from my faults and face again. I waited for my students come to teach me a new lesson in game and shame. Were they absent, either bunking the rest in nooks and corners within? They who are driven or drifted astray, with whim and fancies still bring to feed. Once we all are hesitant, then bold steps indeed. The lessons and witherings, mistakes has us called, behold, those who wish us to be found, fallen, sad, down and out. Vent it all, their frustrations lust, beckoning all, till biting dust on ground found, for forsaken to miseries and anxieties which cracks and caves. Through the maze, we stride and gallop in haze, leaving heavy dump the baggages of past, like menacing rhinos in rage, trotting fierce, towards his target, death, a devastating speed. They too who were acted upon once upon a time, by coercion, violent manipulations many. He watches it all in dismay, waiting, breathing, gasping, simmer. For smiles are made like castles on sandy beaches glimmer, that vanish in single sway of frothy waves, in touch of art feet, onshore winds cool sweet, that make us smile hopeless, hopeful indeed. He prevails through rough and slithery smooth, and the vistas valleys peep, gorges deep. They decided to my plight leave and move on pastures greener anew, meadows few. That promises a respite, dough and fresh air, where they won't cower, feel scared when they dare, when confusions teared, nerves frail, brittle held, through moments of love, compassion felt, where we toiled to preserve, where we toiled to prepare the soil, to till it, sieve it, and sow the seeds. Drenched, sweaty, salty brow droplets shimmer, when his lordships descended to earth, from mighty heavens, to save his men, women, children, lost yet true, with hope found on their sweat or on grass blades, the morning dew. कंटिन्यू बहुत अच्छा कंटिन्यू रखिए और कुछ टाइम की चिंता मत कीजिए टाइम है This poem was full of imageries. So that was wonderful. I mean, Yeah? Okay. I think आजकल बहुत कम लोग लिखते हैं ऐसे. So, I just tried to write and Sorry. I just tried to write. I think I was not You can try Imageries it. were beautiful. Yeah, thank you so much. So, I'm an artist, so when I draw, I have a deep connect with my medium, and whether it's clay or my pen, so I write this. Where the lines from my pen dipped in ink and charcoal sticks wander in vagabond steps, and chisels its nebulous path onto my paper terrains verdant and austere, where its grounds and horizons fosters skeletal forms and robust muscles skinned onto paper, and the yielding clay rustic embraces my inner movements, unconscious with its mysteries graceful and divine, and the trenches in my soul filter its elixir in gestures and strokes beating with my breath, will and vapors. The distance between moon and stars cast with its shade and light on white substrate my sketchbook pages, where muscles swell into spherical and pyramidal shapes, and its forces ebbs deep into oceans and skies far with lunar tides. Its darkness resides in peaceful comfort, and the silhouette traces its path of infinite musings, where the conversations, the dialogues within are set in their own caste, with deep reverberating reminiscences in celestial rhythms and rhymes. From the burnt embers, the wood and ashes anchored
anchored in dark charcoal nights, that sheds the sheath in gentle touch. Their layers with gravity steep and stark, of human mind my groping lines, leaving my soul naked and vulnerable. His grip on my trembling hands mighty, firm. His compassion fragile in transient trenches that carves their struggles in search of truth, when the temporal holds steadfast to the sublime. अच्छा 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 और सुनाइए Thank you so much. आप घबराए ना और सुनाए आराम से तसल्ली से आप ढूंढ लीजिए Okay. स्पीड टिका के रिलैक्स होकर सुनाइए आर्टिस्ट जब कलम चलाते हैं तो उसमें रंग अपने आप आ जाते हैं शाही का रंग कोई भी हो भावनाओं के रंग हजारों जो होते हैं तो साथ में आ जाते हैं और रंगों की उनको पहचान भी होती है Thank you. Okay, so this one is when I languished on my bed aimlessly, the classical music reverberates in the background, with chirping birds and buzzing bees' rhymes, sitting on branches and sucking the flowers' nectar sweet. His mood dwelling in dull, self-hatred pity, their songs to soothe his nerves brittle. The lyrics and compositions around where he lives and relaxes, to setting sun's hope and promise cast, humanity's hatred, dread, clumsiness of mind, their foibles, weaknesses innumerable dark, the eyes closed in prayers and remembrance, the thoughts very sad, that seethingly solemn, that stutter and screech on gramophone stuck, the notes, the tunes repetitive blurred, grinding needle on a black bakelite track, the book open in his hand, sitting on his balcony alone, gazing. The parting dark clouds and the resilient blue skies, where stars and diminishing sun is forgotten, showing ripped skeletons of bones, withering, scattered, fluffed clouds. His grace that droplets fell in cascading drizzles. Its cool, condensed, wet, somewhat light. On his stand, arm and neck bare, soft, coaxing my dark moods to soothing merriness charms. Smiling flowers and gay green leaves, when heart pumps lively songs. Oh yes, while he lay languishing on his bed, sad, to the return, a call of his balcony alone, watching trees, birds flying in parting clouds, where skies peeping through luminous tents, when winds vagrant vagabond, drift lost in loony moods far and fierce, holding book in his hand, searching. My eyes read the incoherent words in dismay, the stories and characters of someone's mind, falling within its crevices deep and narrow, where the needles ruminate the repetitive tunes and rhymes, times, humanity puzzled with hunger, war and strife, where man kills man to hate and revenge, the power lords and the stalemate moves, meaningless life, formidable pride. My brain too small to comprehend the vastness of man's greed and anger, puzzled I am to daily news bloody. My heart misses its essence of life. बहुत अच्छी बहुत